बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हावर्ड अकेडमी। करंट अफेयर्स, ये जितने भी इश्यूज़ हैं, वाक़यात हैं, जब हम जिस डेट को बात करते हैं तो इससे प्रीवियस होते हैं। डेफिनेटली जितनी अकरेंसेस होते हैं, वाक़यात होते हैं, वो जब हो चुके होते हैं तो हम उनकी एक समरी टाइप। आज हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स, वो 29 मई 2024 के वाक़यात हैं और इनकी ब्रीफली हम गो थ्रू करेंगे। अच्छा जी, हाइलाइट्स फ्रॉम रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऑन द गज़ा क्राइसिस। जो फ़लस्तीन में जुल्म सितम हो रहा है, उस हवाले से अब तक मुख्तलिफ़ जगह पे इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मेटा आइडेंटिफाइड लाइकली AI जनरेटेड कंटेंट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम praising Israel's handling of Gaza crisis attributed to Tel Aviv-based firm STOIC. European Union's Varhelyi met Netanyahu amid set ICC arrest warrant request. Brazilian President Lula removed his ambassador to Israel amid a diplomatic spat. Spain, Ireland and Norway recognized the state of Palestine, boosting the Palestine cause. Gaza's wounded children remain without medical aid due to the closed Rafah crossing. Israel claimed full control of the Gaza-Egypt border. Over 30 countries condemned Israel's attacks on Gaza hospitals at a World Health Organization meeting. World Central Kitchen halted operations in Rafah due to ongoing attacks. Blinken urged a post-bombardment plan for Gaza. The US criticized Israel's civilian harm in Gaza. Israeli operations in Gaza are expected to continue for years. China's Xi expressed deep pain over the Gaza situation and called for an immediate ceasefire. इसके बाद है जी, मिसिंग कश्मीरी पोइट अहमद फरहाद शाह लोकेटेड इन पुलिस कस्टडी। ये एक बड़ा वाक़या है जो एक जो झगड़े की सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट was informed that missing poet and journalist Ahmad Farhad Shah is in Dahirkot police custody. Shah had been missing since May 15, leading to petitions for his recovery. Justice Mohsen Akhtar Kiani demanded reports from intelligence agencies which denied involvement. Attorney General Mansoor Usman Awan confirmed Shah's custody and presented a police report. The court directed further consultation with Shah's family. Shah family finally met him in Muzaffarabad, confirming his well-being. अच्छा जी, इसके बाद है जी, कराची सिजल्स ऑन हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। कराची में साल का गर्म तरीन दिन ऑन May 29, 24 Karachi experienced its hottest day of the year with temperature soaring to 41.5 Celsius. According to the Pakistan Meteorological Department (PMD), this peak follows a previous high of 40.2 Celsius recorded on May 19. The normal temperature for Karachi in May is 35.8 Celsius. The highest temperature ever recorded in Karachi was 48 Celsius on May 9, 1938. The Regional Meteorological Center (RMC) predicts heat wave conditions in Karachi, Thatta, Badin and Sujwal districts, with temperatures rising to 43 to 45 Celsius until June 1st. Assistant Meteorologist Arshid Ali confirmed that severe heat wave conditions will persist across the province. Further है जी, खबर मनिका assaulted outside Islamabad court in इद्दत केस। इद्दत केस में खबर मनिका ने बुशरा बीबी और इमरान खान पर केस किया हुआ है कि उन्होंने इद्दत से पहले इद्दत पूरी किए बगैर उन्होंने शादी की थी, निकाह किया था। उस हवाले से ये मामला चल रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस
अब रेफ़र हो गया है, जो पहले कोर्ट में चल रहा था तो उसका फ़ैसला महफूज किया गया था, लेकिन उसको ख़ावर मलिका को मौका देकर बोलने के लिए उसने जो गलम गलोच की कोर्ट के अंदर, उसकी वजह से पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, इमरान खान के जो फ़ैन हैं, उन्होंने इसको पकड़ कर रगड़ा लगा दिया। उसकी बेसिस पे है जी, ऑन May 29 ख़ावर मलिका द कंप्लेनेंट in the Iddat case against former Prime Minister Imran Khan and his spouse Bushra Bibi was attacked outside an Islamabad court. The court, led by Judge Shahrukh Ajmant, did not announce the reserved verdict and sought the case transfer. Manika had previously accused the judge of bias. The assault, captured on video, involved men appearing to be liars. The incident occurred amid heightened political tensions and claims of judicial pressure to delay the verdict. The case involves allegations against Khan and Bushra Bibi regarding their marriage during Bushra Bibi's iddat period. अगला जनाब इंसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट टू हियर पीटीआई प्ली अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट्स लीगल एक्शन। पंजाब गवर्नमेंट की कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस करें। उस हवाले से ये केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। द लाहौर हाई कोर्ट विल हियर पीटीआई's petition against the Punjab government on Thursday. The Punjab cabinet approved new cases against Imran Khan and party leaders for allegedly spreading anti-state narratives. The PTI's petition argues that these actions violate constitutional rights, including freedom of speech and assembly. The petition names key Punjab and federal officials as respondents and accuses the government of using false cases to suppress Imran Khan and PTI leaders. The Punjab government cites accusations from a journalist claiming Khan's anti-state rhetoric as the basis for the new cases. अच्छा जी, इसके बाद है ईरान्स खamenei seeks trusted hardliner to replace राइसी in June vote. जून में जो वोट होने जा रहे हैं जिसमें राइसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, जिनका शहादत हुई थी हेलीकॉप्टर हादसे में, जो मौसम की ख़राबी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, अब उनका सदर का इंतखाब होने जा रहा है। उस हवाले से उनका ईरान का सुप्रीम लीडर है खamenei, और वो ये चाहते हैं कि उनका माइंड जिनके साथ मैच करता हो, हार्डलाइनर हो, वो सदर बने। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei seeks a fiercely loyal hardliner to replace President Raisi, who recently died in a helicopter crash. The upcoming June 28 elections aims to elect a president aligned with Khamenei's ideals, ensuring stability and smooth succession. Candidates are vetted by the Guardian Council, likely reducing voters turnout due to limited choices. The focus is on finding a president loyal to Khamenei with Revolutionary Guard background. Reformist sidelined from power may participate if allowed. Potential candidates include Pervez Fateh and Saeed Jalili, with registration starting Thursday. इसके बाद है जी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू ईज इन कमिंग मंथ्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी। इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज़ प्रिडिक्टेड टू रेंज बिटवीन 13.5% to 14.5% in May, easing to 12.5% to 13.5% in June. According to monthly economic update from the Finance Ministry, inflation, which surpassed 20% since May 2022 and peaked at 38% in May 23, has recently slowed. The April Consumer Price Index fell to 17.3%, the lowest in nearly 2 years. The Finance Ministry attributes this decline to improved supply chains, staple food availability, and reduced transportation costs. The report suggests the economy will gain momentum due to favorable external and domestic conditions.
फर्दर जी ट्रैजिक बस एक्सीडेंट इन बलूचिस्तान में एक बस का जो एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैजिक बस एक्सीडेंट इन बलूचिस्तान वशूक रीजन रिजल्टेड इन 28 deaths and 22 injuries when a Quetta bound bus plunged into a ravine after a tire burst. The crash, which occurred at 5 a.m., claimed the lives of 6 passengers instantly, with additional fatalities reported later. The Pakistan Army provided airlift support for critical patients. Rescue operation faced delays due to poor mobile connectivity. Balochistan's chief minister and national party leaders expressed deep sorrow, emphasizing the need for two-way roads to prevent such incidents in the future. Further, New Delhi records highest ever temperature of 52.3 Celsius. न्यू दिल्ली में अब तक का सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है. न्यू दिल्ली experienced an unprecedented temperature of 52.3 Celsius on May 29, 2024, breaking the previous national record. The India Meteorological Department (IMD) issued a red alert due to the extreme heat, warning of potential heat illness and heat stroke. The heat wave attributed to climate change is expected to decrease from Thursday. Authorities also warned of water shortage and reduced water supply due to the severe heat. Currently, India faces cyclone Rimal's aftermath, causing significant damage and fatalities in West Bengal and Mizoram. Pakistan also reported extreme temperature peaking at 53 Celsius in Sindh. Further, Afghan youngest aim for T20 World Cup glory. The Afghan cricket team, with an average age of 25, targets success at the T20 World Cup after impressing in the ODI World Cup, defeating Pakistan and England. They are now among the favourites, shedding the upset tag. The team, backed by passionate Afghan supporters, feels immense joy representing their country despite challenges like the Taliban's stance on women's sports. Afghanistan's cricket has thrived with new facilities and fan support. The team's dedication has earned them admiration and high hopes from cricket enthusiasts, promising a competitive spirit at the upcoming World Cup matches. Further, North Korea's balloon provocation, trash and excrement over South Korean border. South Korea accused North Korea of sending balloons filled with trash and excrement across the border, calling it dirty and dangerous. North Korea vowed to send more balloons in retaliation. The South Korean military deployed units to inspect and collect the objects. Over 260 balloons were detected, some containing animal feces. The North actions are seen as a test of South Korea's response. This incident follows tensions over balloons carrying anti-Pyongyang leaflets. North Korea also attempts to jam GPS signals in South Korea. Balloon launches had faced bans but were later ruled constitutional. ये थे जी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो नेशनल भी थी, इंटरनेशनल भी थी, और इस तरह की ये जो एक्टिविटी है हमने जो स्टार्ट की है, इस पे आपके क्या रिमार्क्स हैं, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा. और इससे अगर फ़ायदा हुआ तो इस सीरीज़ को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे. और अगर आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप लाजमी कमेंट करें कि इसको हम डिसकंटिन्यू कर दें. सो वी विल होप कि ये फ़ायदा ही देगा. ये आपकी डेली की एक करंट अफेयर का जो मामला एक कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको ग्रिप करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ये ज़रूरत इस कोर्स की थी, तो इसलिए हमने ये लॉन्च किया है. आप लोगों के कमेंट्स की भी अहमियत है, कमेंट्स लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी आइंदा से यूँ ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और टाइमली आप अपने लेक्चर को गो थ्रू करें.